so that Hello guys, good evening. In today's class, we will going to learn trigonometrical ratios and standard angle table. So what is this trigonometrical ratios? I have already made up so many videos on that. I hope you have already finished watching that all the videos. And now in today's video, in today's lecture, we're going to learn trigonometrical ratios and in detail. And also we're going to learn something is called a standard angle table. So what exactly is standard angle and how to get the values of the standard angle table? I'm going to give you all tricks, plus we will going to do this 10 sums in this today's class. So I don't know how much I'll be able to finish, but we will try and finish all these 10 sums and the standard angle table. So stay tuned till the end, and then let's see how exactly get this standard angle table quickly in your book. So guys, I'll advise you all to write it down along with me so that you do not miss out any single thing. So what is exactly standard angle? So standard angle means, say, suppose when you draw right angle triangles, so there are two types of the right angle triangles. Okay, so basically what are the two types of the right angle triangles? One is 30, 60 and 90. So this is 30, 60 and 90 degree, and another one is 45, 45 degrees. Are you getting it? That is something called as isosceles triangle. Are you getting it? So what exactly is this isosceles? So in that case, this become 1, this become 1, and this become root 2. And then in 30, 60 and 90, say suppose this is, if this is 1 or if this is 2, then this becomes 1 and this becomes root 3. Now how exactly it comes and all that things, I'll make one another specific video on that, how exactly it comes. But this is like standard things, like 2 square is equal to root 3 square plus 1 square, isn't it? And root 2 square is equals to, okay, root 2 square is equal to root 1 square plus root 1 square, isn't it? Something like that. You can just get these are standard Pythagorean triplets. And now what we're going to focus in this particular sums, like there are standard angles, like say sine value, what is cos value, and what is tan value. And what we'll also going to learn, what are the standard angles, like 0 degree, 30 degree, 45 degree, and 60 degree, and 90 degree. And I'll try and give you one trick or like a best tip for this particular table. Okay, so first of all, we'll understand the basic things, like, okay, suppose if I want to find sine 0, so sine 0 is basically 0. Okay, then sine 90 is basically 1. Okay, one second, let me see where is my cursor. Okay, here is a cursor. So sine 0 is 0, sine 90 is 1, sine 45 is 1 by root 2, and sine 30 is 1 by 2, and sine 60 is root 3 by 2. Now how do I know this, these particular values? It's very simple. I'm doing since so many years, so I know this. But as a student, you must remember like this way your all the values. Like say suppose if someone wants, what is sine 0, so it will be always 0. What is sine 30? It will be always half. Sine 45, it will be always 1 by root 2. Sine 60, which is root 3 by 2. Sine 90, which should be always 1. So say once again together along with me and quickly write it down in your book. Sine 0, 0. Sine 30, half. Say along with me. Sine 30 is half. Sine 45, sine 45 is 1 by root 2. Sine 60, sine 60 is root 3 by 2. Sine 90, sine 90 is 1. So you can check this out. Okay, suppose in this particular, one second. Say, suppose if I have to do something like, say, sine 30. So what I'll do, sine 30 would be what? Sine 30 would be opposite upon hypotenuse. So that will become, say, okay, this should be 30 and this should be 60. One second, I just made one small error. I'll just rectify it. This is supposed to be 60 and this is supposed to be, okay, I just did ulta. So sines, suppose this would be 60 and this would be 30. So sine 60 would be what? Root 3 upon 2. Look at this. Sine 60 is root 3 upon 2. Sine 30 would be what? 1 upon 2. Opposite upon hypotenuse, isn't it? So that way this triangle works. And if you can't remember this triangle, don't worry students, I'll give you a simple trick how to remember all these things. बस stay tuned कीजिए और थोड़ी देर और wait कीजिए, मैं आपको इसकी simple trick भी बता दूंगा ये वीडियो खत्म होते होते. Okay, now next thing is cos. Like suppose we want cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. What we're going to do? Simple, we're going to write it on the reverse way. Like sine 90 would be cos 0. So this will become 1. I will going to cover in today's video why this. Okay, sine 0 is cos, okay, sine 90
is cos 0. Why? We will going to end up today's class with this question only. Okay, cos 30 would going to be sin 60. So ये यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा 1/2 and ये बन जाएगा 0. You understood what I did? Whatever is this sine table, we just wrote in the reverse way over here. Like, you know, 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ पर आ गया, 1/√2 यहाँ पर आ गया, 1/2 यहाँ पर आ गया, and 0 यहाँ पर आया. That way we can write down the sine and cos. And now you know, student, what is this tan ratio? Tan is sine upon cos, isn't it? Tan is sine upon cos. So what we'll do, tan value, we're going to do sine theta upon cos theta. So 0 upon 1 is 0. 1/2 divided by √3/2, it will become 1/√3. If I'll do these divided by these 2 and 2 will get cancelled, so 1/√3. If you can't do the division, simply iska numerator में डालो, iska numerator denominator में डालो, 1 upon 1, so it will become 1. Or else 1/√2 divided by 1/√2, it will get cancelled and it will become 1. √3 upon 2 divided by 1/2, so this 2 and 2 will get cancelled, so this will become √3. And then 1 divided by 0 becomes not defined, or you can say infinite, or it is not valid in our maths. Isn't it simple? So you can remember, student, like this way: tan 0, 0, tan 30, 1/√3, tan 45, it's 1, tan 60, √3, tan 90, infinite. Isn't it simple? So student, please, without wasting time, put this quickly in a book. Hurry up. I'll just give you 1 minute to all. You can pause this video over here and you can write it on this quickly in your book. You'll have to remember, student, all these values. You'll have to remember by heart all these values, because the sums what you're going to get something like this, as I already showed you over here, isn't it? अगर आप यहाँ पर सोचेंगे tan 30 चाहिए और मुझे tan 30 के लिए पूरा का पूरा टेबल लिखना पड़ेगा, then आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है. Are you getting it, student? So you must remember this all this value by heart. Don't worry, towards the end of the sessions, I'm going to give the trick how to remember all these values. Okay, prior to that, we will go ahead, we will go to write it down over here, cot theta. So what will be cot? Again, student, you'll have to remember, once you finish writing this tan over here like this way, you'll have to just write reverse way. You'll have to write from this direction. So this will come over here infinite, this will come √3, this will come 1, this will come 1/√3, and this will come 0. Isn't it very, very simple, student? So you'll have to remember some other way, only one line. Like say sine, you'll have to remember perfectly. Say 0, half, 1/√2, √3/2, and 1. And uske baad cos will write just the reverse way from here to here. Isn't it? You're going to get this row. Then tan would be sine upon cos here. 0 upon 1, this 1, this √3, and this would be infinite. Cot के लिए हमने क्या किया, just reverse कर दिया. Now next thing is sec and cosec, isn't it? So how to get this sec and cosec? I'll just teach you. Just stay tuned. देखो यहाँ पर क्या करना है. स्टूडेंट कीप राइटिंग लॉन्ग विथ माय एक्सप्लेनेशन एंड पूरा ध्यान यहाँ पर रख दीजिए. स्क्रीन पे बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको. सेक थीटा क्या है? सेक का रिलेशन क्या है? सेक इज 1/cos. sec theta is 1/cos theta, isn't it? So 1/cos करने बैठेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे. 1 का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है? 1. √3/2 का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है? 2/√3. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट्स वेरी सिंपल टू डिराइव दिस टेबल. अगर किसी को याद नहीं रखना है, नो प्रॉब्लम. आप ये शुरुआत के एग्जाम का जैसे आपकी एग्जाम शुरुआत हो जाती है, यू कैन राइट डाउन दिस एंटायर टेबल इन योर प्रॉपर answer booklet. Are you getting it? No one is going to scold at you for this. Arey, why you written this and that way? Okay. Anyway, we'll move further. 1/√2 का square, I mean reciprocal क्या हो जाएगा बच्चों? Because sec is रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. सो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2. देखो बच्चों, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2. 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सिंपल, इट्स इनफाइनाइट, इट्स नॉट डिफाइंड. So you can remember like this way. And then cosec के लिए क्या करेंगे? Once again we'll write the reverse way. So ये infinite इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये √2 इधर आ जाएगा, 2 upon √3 यहाँ पर आ जाएगा, and then this 1 will come over here. I hope you understood this. Simple student, isn't it very simple? I'll just zoom out this so that you can just verify you've written all the values perfectly or not. See देखो, पूरा का पूरा टेबल आपको बाय हार्ट होना चाहिए. अच्छे से समझ लीजिए. साइन 0 से लेकर 90 तक, कॉस 90 से लेकर 0 तक रिवर्स लिखो, tan साइन अपॉन कॉस लिखो, फिर दैट वुड बी 0, 1/√3, 1 √3 एंड इनफाइनाइट. कॉट रिवर्स लिख दो सीधा, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 एंड 0 लिखो. सेक वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस वुड बी 1, 2/√3, √2, 2 एंड इनफाइनाइट. जैसे सेक बन जाएगा, कोसेक के लिए क्या करेंगे? रिवर्स लिखेंगे. जैसे इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 and 1. I hope you've understood till here. And now how to remember that trick, I'll just teach you quickly so that you can
Now you do not have to memorize the entire thing, you can just remember this first line. Okay, so I hope you finished writing. अगर आपने इसको लिखा नहीं अच्छे से तो जल्दी से एक काम कर दीजिए, आपको क्या करना है, ये वीडियो को पॉज कर देना है इधर के इधर, और ये प्लीज राइट डाउन दिस टेबल क्विकली इन योर बुक. सो स्टूडेंट, how to memorize this first line? Okay, I'll going to give the trick for that. As I promised you, I'll going to give the trick for this. Okay, सो आपको क्या लिखना है बच्चों, देखो तीन स्टेप लिखने हैं यहाँ पर, तीन स्टेप करेंगे. तीन स्टेप क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 to 4 नंबर लिख देंगे. जीरो, देखो जीरो के ऊपर जीरो लिख दें, 30 के ऊपर 1 2 3 4, और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये सबको, ये सेकंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप कहता है 0 to 4 नंबर लिखो. सेकंड स्टेप, सबको 4 से डिवाइड कर दो. 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4. एंड नाउ स्टूडेंट, थर्ड स्टेप, थर्ड एंड लास्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, मेरे साथ बोलो जल्दी से. वेरी नाइस, 0 to 4. सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप, सोचो 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 जल्दी से. सेकंड स्टेप, वेरी गुड, डिवाइड एवरीथिंग बाय 4. एंड थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप बच्चों, हमको क्या करना है, सीधा थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है. सीधा क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है. जैसे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको फर्स्ट रो मिल जाएगा. देखो 4/4 बन जाता है 1, 1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 1, √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2. सो दैट्स व्हाई √3/2. ओके, यहाँ पर बन जाएगा. देखो अभी कई लोग यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, सर यहाँ पर √2/2 आना चाहिए, तो 1/√2 कैसे है. हमने सिर्फ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया. जैसे कि इसको 1/2 लिख देंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे. 1 का स्क्वायर रूट 1 है एंड √2 का, आई मीन 2 का स्क्वायर रूट है √2. इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा 1/2, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 0/4 बन जाएगा 0, एंड उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 0. एंड वंस यू गेट द फर्स्ट लाइन, आई गेस स्टूडेंट बाय नाउ यू नो हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ cos, tan, cot, sec, cosec. Isn't it simple? So without wasting time, pause this video and completely put it in quickly in your book. Hurry up guys, I'll just give you 2 minutes to copy paste this. Okay guys, I hope you have finished writing this table and now it's time to do this 10 sums quick. I guess इसमें से ये sum number 5 हम लोग नहीं करेंगे, we will have to skip that, but rest of the things we will try and finish as fast as we can. And then once we finish this, I will teach you why sine 0 is equal to cos 90 or why cos 0 is equal to sine 90. वो जो मैंने relation बोला है आपको, at the end of this today's session you will come to know. Don't worry. So stay tuned and keep watching this video till the end. Okay. So let's move ahead. What is this first thing is First sum is like this. Find the value of cos 0 plus sin 45 plus sin 30 into sin 90 minus cos 45 plus cos 60. तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर सीधा का सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. सिलेक्ट, ओके, ये वाली सम को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ मैं, बस बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ. ओके, ये पर्टिकुलर सम को क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करना है. ये मेरा पहला वाला सम है, आपको भी आपके बुक में इसी तरह से ये क्वेश्चन को कॉपी कर देना है. जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस सम स्टूडेंट्स, लुक एट दिस. नाउ आई नो व्हाट इज दिस cos value, isn't it? So what is this cos value? Okay, one second. So guys, what is this cos 0? Look at this, cos 0 होता है 1. So cos 0 मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 plus what is sin 45? It is 1/√2. And what is sin 30? It is half. So मुझे इसको add करना पड़ेगा and then I'll have to multiply this with this huge bracket. What is sin 90? Sin 90 is 1. What is cos 45? Minus 1/√2. Please follow the board mass and the fraction rules very well. Cos 60. Cos 60 क्या बनेगा? That would be half. So if you do not know what you can do students, you'll have to just zoom it out or else you'll have to just refer your this table very well. Like cos 60 क्या है? 1/2. Cos क्या बोलते हैं? 45 क्या है? Cos 45 would be 1/√2. So I knew this table very well. So you know I could immediately substitute. But ऐसे हो सकता है कि आपको ये टेबल बाय हार्ट नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, isn't it? So better you keep doing that systematically. Now इसको आगे बढ़ाते हैं. इसका LCM क्या बन जाएगा बच्चों? इसका LCM बन जाएगा से 2. सो अगर इस मुझे 2 चाहिए तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई बाय 2 करो.
और यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि तभी जाके ये 2 बनेगा, एंड फिर +1 करो, इजंट इट? एंड सेम थिंग यहाँ पर बच्चों एलसीएम क्या रहेगा, और 2, सो यहाँ पर रिक्वायर्ड है 2 माइनस √2 +1। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखते हैं, ये बन जाएगा 2 + 1 3 प्लस √2 होल थिंग अपॉन 2, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 + 1 3 माइनस √2 अपॉन 2। ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं, सर ये कैसे करते हैं, हमको नहीं आता है। सिंपल, इसमें से क्या करेंगे, ये 1/2 इंटू 1/2 बन जाएगा 1/4, isn't it? 1/2 into 1/2 बन जाएगा 1/4, एंड ये 3 + √2 इंटू 3 माइनस √2 बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, isn't it? सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा सोचेंगे, मैथ्स का बेसिक अगर आपको पता रहेगा तो ये है a + b इंटू a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा था कुछ दिनों के पहले, तो वो उधर से ही आया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a + b इंटू a माइनस बी। सो ये बन जाएगा 1/4 इंटू √3 का स्क्वायर बन जाता है बच्चों 9 माइनस √2 का स्क्वायर बन जाता है 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 7/4। 7/4 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 7/4 कैन बी डन एज 4 1s are, 4 2s are 8, but 4 1s are and 1 whole 3/7। अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए और पुट इट क्विकली इन योर बुक। अगर नहीं समझ में आया, स्टॉप दिस वीडियो एंड रिवाइंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द 1 to 10 सम्स क्विक क्विक क्विक। सो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं वीडियो को एंड कॉपी पेस्ट दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली ऑन बुक। हरी अप गाइस। Okay, guys, now we are starting with sum number 2, and you must copy paste this question quickly in your book. So if you're finished writing this, let's start ahead. Sine square 30. So what will be sine square 30, guys? So it will be half and then square. Cos 45, cos 45 and square. Cos square 45, it will be 1/√2 and uska square plus 4 into tan 30। tan 30 क्या है बच्चों, 1/√3। tan 30 है 1/√3 एंड उसका स्क्वायर प्लस, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट कॉपिंग द क्वेश्चन एज इट इज, एंड वेर एवर इट्स सब्स्टिट्यूशन आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग। साइन 90, साइन स्क्वायर 90, सो साइन 90 है 1 एंड उसका स्क्वायर कर दो, माइनस 2 cos 90। so what is cos 90, guys? See, 1 second. So 2 into cos 90, cos 90 is basically 0 plus 1/24. Now student, look at this, a huge long statement, but don't worry, it's just basic board mass. So इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1/4। इसको क्या करेंगे 1/√2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/2, so into 1/2, so ये 1 ब्रैकेट में, because this there is like multiplication, प्लस ये बन जाएगा, पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, सो बन जाएगा 4/3 प्लस इधर पहले इनको स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, 1 into हाफ बन जाएगा हाफ, सो विल पुट दिस आल्सो इन ब्रैकेट, दिस बन जाएगा 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/24। एंड नाउ स्टूडेंट, इट्स टाइम टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर एलसीएम क्या बन जाएगा, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 24, सो द एलसीएम विल गोइंग टू बी 24, isn't it? So 8 3s are, so I'll put it 3 plus 3 8s are, so 8 4s are 32 plus 2 into 12, so ये बन जाएगा plus 12 एंड प्लस 1। Isn't it simple बच्चों? तो देखो अभी क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 32 + 3 35, 35 + 13 48 upon 24, ये बन जाएगा 2। Isn't it very very simple sum? Just pause this video and immediately copy paste this entire sum number 2 in your book. Hurry up guys. Okay, guys, now pay attention. On the screen, there is sum number 3. And now what is there in sum number 3, students? Look at this, or you can say sum number 4. These two sums are like, show that, or they were to find the value of theta. So up tak humne kya dekha tha? We have to find the value of this one, say, big polynomial. But now we have to show that or prove that sum. So whenever there is prove that sum, students, हमको क्या करना है? Whenever there is a prove that sum, students, हमको इनके LHS और RHS सॉल्व करने पड़ेंगे। गाइज रिमेंबर दैट व्हेनेवर इट इज शो दैट सम, आपको क्या करना है, LHS एंड RHS सॉल्व करना है। प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर दैट इफ यू डू बोथ साइड्स टुगेदर you will get straight 0 marks. So what is LHS? I'll copy paste this. That is 2 tan 30 divided by 1 plus tan square 30.
which we'll have to prove is equals to sin 60. So we will see how to prove that. So पहले LHS लिख दिया, फिर इधर लिख दो 2 tan 30. So 2 into tan 30 is कितना है 1 by root 3 and 1 plus what is tan square 30, 1 by root 3 का square. नाउ स्टूडेंट आप क्या करेंगे, देखो अब इसको सिंपली करेंगे, ये बन जाएगा 2 अपॉन रूट 3 न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डिनोमिनेटर में बन जाएगा ओके डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3. एंड नाउ स्टूडेंट अब हमको और आगे बढ़ना है, देखो इसको कैसे करेंगे, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय, बिकॉज इट वाज इन द डिनोमिनेटर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर डिवीजन साइन डाला है, सो ये क्या बन जाएगा बच्चों 3 1 3 प्लस 1 4 बाय 3. अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ये डिवीजन है, ये डिवीजन को कैसे ट्रीट करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस. सो 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, ये बन जाएगा, और ये रूट 3 इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा रूट 3. एंड नाउ बच्चों वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू साइन 60. साइन 60 क्या है बच्चों, रूट 3 अपॉन 2, isn't it? That is equals to RHS, hence proved. Isn't it simple? अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं होता है कि लाइक अरे रूट 3 अपॉन 2 क्या है, तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर लिख सकते हैं RHS is sin 60 which is root 3 by 2 and hence prove, ऐसे भी लिख सकते हैं. I hope guys you understood how to do this one. Quickly I'll just zoom it out and you can put this quickly in your book. Hurry up guys, move, do fast quickly. This was sum number 3. And अगर आपका ये लिख के हो चुका है तो we'll move to question number 4. So what is this sum number 4? Okay, you can just pause this video in case if you want to write something. Don't worry students. So we're moving with question number 4. So what is this question number 4 student? देखो यहाँ पर लिखा है if 3 theta is acute angle and tan 3 theta minus root 3 is equal to 0, find the value of theta. देखो 3 theta की वैल्यू दी है और हमको theta की वैल्यू ढूंढनी है. What is supposed to find the value of theta? Now how to do that student? Look at this. So I'll just copy paste this question. Copy paste tan 3 theta minus root 3 is equal to 0. तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो tan 3 theta is equal to root 3 बन जाएगा, ये root 3 को इधर शिफ्ट कर दो. But we know tan what angle is equal to root 3? Tan, we know tan 60 degree is equals to root 3, isn't it? देखो यहाँ पर अगर आप देखते हैं अच्छे से, tan 60 is equal to root 3. So यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan 60 degree is equals to root 3, isn't it simple? Tan 60 degree is equal to root 3. 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3. देयरफॉर अगर हम लोग ये दो सेंटेंस को कंपेयर करते तो हमको पता चलेगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60. अगर 3 थीटा इज 60 है, सो थीटा क्या बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3, सो थीटा बन जाएगा 20 डिग्री. इजंट इट वेरी सिंपल सम? सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 3 and 4. I guess this is the time to pause this video and put this sum quickly in your book. Hurry up guys. Okay. सो गाइज अभी हम लोग सम नंबर 6 पे पहुंचे, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. ये भी वेरी सिंपल सम है, सेम टाइप जैसे हम बिम ने सम नंबर 4 किया था, या सॉरी 3rd किया था या फिर 4th किया था, उसी टाइप का है. देखते हैं ये सम कैसे करना है, देख लीजिए. 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो अगर मैंने ये 1 को इधर शिफ्ट कर दे तो ये बन जाएगा 1. सो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि ये 4 इधर नीचे आ जाएगा. एंड नाउ साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, साइन थीटा अगर मैं करता तो ये 1/4 बन जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा. हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, बिकॉज वट एवर वी लर्न ऑल द साइन, अभी एटलीस्ट till the 9th and 10th standard we have only positive values, because in acute angle there is nowhere negative values, isn't it? So sin theta is 1/2 when sin 30 degree is equals to half, isn't it? When sin 30 is half, that means theta कितना बन जाएगा बच्चों, simple, theta will become 30 degree. And once we'll get theta as 30 degree students, इसके बाद आप सब कुछ सब जगह पे यहाँ पर 30 substitute कर दीजिए and खुद से solve कर दीजिए. All the best guys, do it, try doing quickly this 1, 2 and 3 sums by your own. Substitute क्या करना है आपको, theta is equals to, बच्चों आपको क्या सब्सिट्यूट करना है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सब्सिट्यूट करना है. जल्दी जल्दी कर दीजिए अपने बुक में, खुद के बुक में जल्दी से चालू कर दीजिए. आई विल वेट फॉर यू ऑल. यहाँ पर आपको डालना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 प्लस टैन स्क्वायर 30 एंड लाइक दैट वे. कॉस 2 into 30 लगा देना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस. सो आई विल गिव यू ऑल दिस एज अ होमवर्क सम. चलो टेक केयर.